Hello to everyone. Intellectual property right? Right, nahi, intellectual property rights. Okay. We will continue with this topic, intellectual property right. If someone asks to you guys that what is the intellectual property. If someone asks to you that what should be considered as the intellectual property, तो क्या बोलोगे आप वहाँ पे कि क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? Actually, any types of the आप कह सकते हो कि just found the justification of what? Justification of any types of the intellectually performed task. Okay, including the literacy, including the inventions. Fine. So this is considered as the what? Intellectual property. Okay. If anyone is just doing any new invention, okay, you can say the actually uh, published any new book, okay, new literatures, okay, so this is his own rights, okay, this is his own property, okay, which is developed by that guys intellectually by using the what intelligence of that guy, okay. So this types of the property is considered the what, this type of the property is considered the इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, जैसे सपोज करो कि अगर आपने कोई एक नया इन्वेंशन किया और आपने बताया कि ये चीज़ ऐसे से ऐसे होता है, फाइन. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इन्वेंशन एंड व्हेन यू आर जस्ट गिविंग द क्या बोल सकते हो उसको आप, ऐसा आपने दावा किया सबके सामने पब्लिकली, मतलब आपने दावा किया कि दिस इज माई ओन प्रॉपर्टी. ओके, सो आफ्टर दैट if this is your own property you cannot or you can say you will not taking the assistance from the any another types of the same inventions, okay. You can say ki your invention is not a copy of another invention, okay. So you are eligible for the claiming the intellectual property rights, okay. And the government of the particular country will provide you the intellectual property rights and will provide you the patent also. ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि इफ़ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ओके, तो यहाँ पे क्या क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो सकते हैं, ओके. अभी ऐसे लिखते हैं जैसे सपोज दैट IPR, ओके, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कंसिडर द IPR, ओके, IPR, क्लियर, ओके. IPR के बारे में जब बात करते हैं तो IPR इज लाइक द, ये इसके देयर आर सो मेनी IPRs, ओके. आप ये कह सकते हैं कि in the, if we are just talking about the what types of the intellectual property, okay, what types of the intellectual property, कितने types के होते हैं intellectual property, okay. So if we are just talking about then we will find that like the what, like patent, okay, copyright, और क्या बोल सकते हो, like the GI tag, geographical indications, okay, geographical indications, fine, or trademarks, clear. So these are all considered as the what? Considered as the intellectual property. Okay. So if we are just talking about the IPR, then we will find that like copyright. Copyright. Actually, when the government is giving you the copyright, so this is the assurance of your property कि आपकी इस प्रॉपर्टी को कोई भी कॉपी करके उस पर क्लेम नहीं कर सकता है. ठीक है, कोई भी आपकी इस प्रॉपर्टी को क्या कर नहीं कर सकता है, कोई चोरी नहीं कर सकता है, उस पर अपना क्या बोल सकते हो ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता है. फाइन. तो इफ़ यू गॉट दिस व्हाट दिस राइट्स, ओके, तो ये बताता है कि दिस इज योर ओन प्रॉपर्टी, ओके, लाइक द कॉपीराइट्स, ओके. कॉपीराइट्स नेक्स्ट लाइक द प्लांट वैराइटीज. Suppose that ki if any scientist is what performing the cross hybridization, or you can say the crossing between the two types of the species, and the resulting is the new hybrid is formed, okay. So plant varieties will be given to that particular person, or you can say that scientist, okay. So next, the industrial designs.
and we have to and like the word trademark, okay, patent, fine, patents, confidential information, confidential information, okay. Next, like the layout design of the integrated circuit, layout design, okay, of integrated circuit, okay. And the next one is the last one, not the least, this is the geographical indication, geographical indication, clear. So here these are some what, some IPR is given, okay. IPR like the copyright, plant varieties, industrial design, trademarks, patent, what, confidential information, geographical integration and all. सपोज करो जैसे इफ यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस, ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ, यू हैव डेवलप अ स्पेसिफिक लोगो फॉर योर फर्म और फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर कंपनी, ओके. सो नो वन कैन what use your what no one can use your logo, okay, because of what, कि उसको आपको, this is your trademarks, okay, it will be trademarks of the particular company, जैसे आपकी कोई भी फर्म होगी, कंपनी होगी, ठीक है. So this is considered under the trademark. So these are the some here the intellectual properties rights are here, and this is the considered as the several types like the copyrights, plant varieties, industrial design, trademarks, patents, confidential information, layout design of the integrated circuit, and the geographical indications, okay. ठीक है. एक्चुअली ऐसा कुछ बिलीव किया जाता है, ठीक, कि इन द 16th सेंचुरी, ओके, इन द 16th सेंचुरी देयर वाज इन इंग्लैंड एक्चुअली द फर्स्ट टाइम द थीसिस ऑफ कॉपीराइट्स आप कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि द जेनेसिस ऑफ, एक्चुअली द जेनेसिस ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टेक्स प्लेस, ठीक है, इन द इंग्लैंड एट दैट टाइम व्हेन देयर वाज अ पब्लिकेशन ऑफ अ बुक, ओके, ठीक है. अभी ऐसा कुछ रहा होगा कि देयर वाज एक्चुअली डिबेट, वाइड डिबेट ओवर द पब्लिकेशंस ऑफ अ बुक, ठीक है. उस किसी एक बुक का पब्लिकेशन था, तो देयर वाज सो मेनी क्या ओनर्स आर राइजिंग राइजेस एक्चुअली, एंड दे हैव क्लेम्ड दैट कि वो उनकी बुक है, वो बोले उनकी बुक है, वो बोले उनकी बुक है, ओके, इन द 16th सेंचुरी, फाइन. So the first time the intellectual property right is what is born actually, fine, ऐसा माना जाता है, clear. So here is the बोला जाए कि if you are just talking about what is the need of the what copyrights, okay, why यहाँ पे need क्यों पड़ा copyrights का, for the protection of the intellectual properties, okay, for the protection of the इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके. अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा कोई ऐसी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, या सपोज करो कि ही इज़ इन्वेंटिंग समथिंग न्यू, ओके, यू कैन से ही इज़ डेवलप सम ट्रेडमार्क्स ऑल्सो, ठीक है. तो फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द प्रिजर्वेशन, नो, फॉर द सिक्योरिटी पर्पजेज, द copyrights would you can say, sorry, intellectual property rights should be given, okay. So here is the need to protect and promote the IPRs. So intellectual property right refers to creation of the mind, invention, literally, and the artistic works, okay, and symbols also, name and image used in the commerce, okay. अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि intellectual property refers to the creation of the mind, okay, creation of the
माइंड, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड द आर्टिस्टिक वर्क एंड सिंबल्स, ठीक है, names and images, okay, used in the commerce. Okay, so there are many compelling reason to promote and protect the IPR. ठीक है, बहुत सारे इसके रीजन है कि IPR को क्यों प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. ठीक, why the protection of the intellectual property rights is what mandatory. Okay, so here is some are here. Suppose that कि जैसे okay, suppose that if someone is actually developing some specific, or you can say some special types of the what special type of the invention, okay, in the area of the cultures or and the technology. Okay, so for the progress and well being of the humanity, ठीक है, उन्होंने मतलब किसी ने ऐसा किया है. And if he done something like this, so there is what, there is the need of the protection of that intellectual property. ठीक है, कि भाई उसने इतना बड़ा काम किया है, ओके, और उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, फाइन, तो इसलिए उसका क्या है, प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. ओके, सेकंड आप ये कह सकते हो कि लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ न्यू क्रिएशन इनकरेजेस द कमिटमेंट ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज फॉर द फर्दर इनोवेशन. दैट मीन्स कि इफ एनी लीगल, जैसे सपोज करो कि मैंने एक बुक लिखी, ओके, एंड समवन इज हियर, जैसे सपोज करो आप में से कोई भी, when I was going for the publications of that books, or I was going for the launching of that books, okay, and at the stage a hand is raises and he said that this is the book of him. Okay, that means उसने ऐसा बोला कि this book is belongs to me. ठीक है, ये बुक मेरी है. ठीक है, this is written by me, ये मेरे द्वारा लिखी गई है. फाइन, तो उस केस में क्या होगा कि मतलब मेरा जो आप कह सकते हो कि क्या बोल सकते हैं, एंथुजियाज्म होगा, ठीक है, वो हतोत्साहित होगा, राइट. एंड आई थिंक दैट कि मतलब और वो मेरे से पावरफुल है. सपोज करो कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक, तो मैं क्या सोचूंगा कि फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल क्रिएट माई थॉट्स दैट कि आई विल नेवर गो फॉर द एनी काइंड ऑफ दिस लिटरेरी. ओके, दैट मीन्स मैं अभी कोई ऐसी बुक्स लिखने वाला नहीं हूँ आगे चल करके. ठीक, सो यहाँ पे क्या है कि देयर इज द लेस चांसेस ऑफ द इनोवेशन. अब मैं बुक नहीं लिखूंगा, मैं अपने आइडियाज शेयर नहीं करूंगा. ओके, तो अब इनोवेशन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे. क्लियर. तो फॉर दिस पर्पजेस द प्रोटेक्शन ऑफ द IPR इज नीडेड. क्लियर. एंड अभी आप ऐसे थर्ड में आप बात कर सकते हो, द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इस पर इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट्स न्यू जॉब्स एंड इंडस्ट्रीज एंड इन्हांसेस द क्वालिटी ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ. ओके, दैट मीन्स कि अगर इसका प्रोटेक्शन होगा IPR का, क्लियर, तो दिस इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल, ओके, फॉर द इकोनॉमिकली पर्पज. ठीक है, जैसे अगर किसी ने इन्वेंट किया, ठीक, इन्वेंट करने के बाद उसको क्या मिला, पेटेंट मिला पर्टिकुलर इन्वेंशन पे. ओके, सपोज करो कि एक बड़ी इन्वेंशन हुई, ठीक है, इन इंडिया, एंड द पेटेंट इज गिवन. ठीक है, पेटेंट इज गिवन टू गिवन टू दैट इंडियंस. ओके, ऑब्वियस बात है कि इंडिया में होगा तो कोई इंडियन ही करेगा. फाइन, सो इन दैट केस व्हाट शुड हैपन, if any country wants to adopt the same technology, ठीक है, the same technology, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, उसके लिए उस पर्सन से बात करनी पड़ेगी कि आई वॉन्ट टू टेक द एडवांटेज फ्रॉम योर टेक्नोलॉजी. ठीक है, मैं कुछ आपकी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता हूँ. इफ यू आर एग्री, ओके, और इन केस ऑफ द नेशंस ही सेड दैट कि इफ यू आर अलाउड टू योर सिटीजन, ठीक, टू शेयर विद अस, ठीक है, टू शेयर द इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी विद अस, तो उसमें क्या होगा कि उसमें डील होती है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी देंगे, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी. कुछ नहीं, मतलब बहुत बहुत सारा पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने के लिए. सपोज दैट इन द स्पेस टेक्नोलॉजी, ओके, स्पेस टेक्नोलॉजी आई हैव एक्चुअली आपसे डिस्कस किया था मैंने उसमें अबाउट द क्रायोजेनिक इंजन, राइट. So cryogenic engine was the technology from the Russia. ठीक है, तो रशियन टेक्नोलॉजी थी. इंडिया adopted the cryogenic engine technology. ठीक है, he talked to the Russia and he paid for that to the Russia. ठीक, रशिया से उसने बात किया, उसके लिए उसने पेमेंट भी किया. And after that the India
using the technology, India is developing his own cryogenic engine. ठीक है, तो लेकिन टेक्नोलॉजी किसकी थी? रसिया की थी. ठीक. So this is very necessary for the what? For the economic, as well as it is also creating the what? It is also creating the new job. ठीक है, opportunities. Okay, and industries also, and enhances the quality and enjoyment of life. अब ऑब्वियस सी बात है कि जितनी ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी होगी, ठीक है, अगर सबको नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, फाइन, इकोनॉमिक इज गुड, so this is what? This is the what? This is upliftment of the what? Development. Okay, upliftment of the quality and the enjoyment of the life. ठीक. Okay, so an efficient and equitable intellectual property system can help all countries to realize the intellectual property potential as a catalyst for economic development and the social and the cultural well-being. Okay, ये बोला जा रहा है कि for the protection, ठीक है, for the protection of this intellectual property, this kind of the intellectual property, ठीक, there is what? There is a system, a efficient and equitable system must be, ठीक है, available here, which is actually responsible for the protection of the intellectual property. That types of the system is actually providing the legal support for the protection of the intellectual property. Clear? That means कि जैसे अगर हम बात करेंगे, अभी इंडिया के बारे में बात करेंगे कि who is giving the what? Intellectual property rights to India. In India, sorry, in India. ठीक, उसमें हम बात करेंगे कि there are the several organizations as well as several treaties have been done, ठीक है, and the several organizations have set up, and the some rules and the norms are also here for the protection of the intellectual property. ठीक है, in case of India as well as worldwide. ठीक है, पूरे मतलब इंडिया के केस में भी और वर्ल्ड वाइड केस में भी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उसमें हम बात करेंगे, लाइक द वीपो, WIPO, अभी करेंगे उस पर बात, द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या काम है उसका, वी विल डिस्कस हियर. ठीक, बट बिफोर दिस एक जनरल ऐसे समझते हुए चलिए कि व्हाट आर द कंसिडर एज द कॉपीराइट, व्हाट इज द पेटेंट्स, ओके, विच इज कंसिडर एज द व्हाट ट्रेडमार्क्स, विच इज द इंडस्ट्रियल डिजाइन, व्हाट इज द GI एंड व्हाट इज द ट्रेड सीक्रेट्स. ओके, इस पर हम बात करते हैं. ओके, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक एक चीज़ थोड़ा थोड़ा उसमें हम ना एक एक पॉइंट्स ऐसे यहाँ पे लिखते हुए और समझते हुए चलेंगे. फाइन, ओके. इरेज कर देता हूँ आप, तो आप इसको, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो. ठीक, ओके, कम. We can see that types of intellectual property, and what are the provisions for the rights related to the intellectual properties. Clear? Like जैसे अब इसमें बात करते हैं, the first one is the copyright. Copyrights. What is considered as the copyrights? किसको बोलेंगे copyrights? Actually copyrights is a legal term. ठीक है, this is a copyrights is a legal term. That means if someone is violating the rules of the copyrights, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा. क्लियर? एंड दिस इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग फॉर what? Providing for the copyright given for literary and artistic work और परफॉर्मेंस. ठीक है साहब, इतना बात क्लियर है. दैट मीन्स इफ एनी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, तो आप जब बुक्स पढ़ते हो ना, तो उसके जो कवर पेज है ना, उसके जस्ट बाद वाला जो पेज होता है, आप देखोगे यहाँ पे C रहेगा और उसको क्या करेंगे, सर्कल से कॉपीराइट. ठीक, कॉपीराइट का सिंबल है ये. ठीक,
एंड कॉपीराइट दिया जाता है फॉर द लिटरेरी एंड द आर्टिस्टिक वर्क. ओके, इफ समवन हैव एक्चुअली रिटन द न्यू बुक, ठीक है, एंड ही इज द एक्चुअल राइटर और ऑथर ऑफ दैट बुक, ठीक है, तो in that case the copyright is given. ठीक, copyright is a intellectual property rights for those particular things. Okay, so in this category, like the artistic and the literary work, okay, there are the work which is covered under this, like the what, like the books, okay, music, okay, novels, right, paintings, sketching, sketchings, clear. sketching, हम्म और क्या हो सकता है, लाइक द sculptures, sculptures, okay, and computer programs, database, computer programs, database, okay, etc. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप ये भी लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लियर. So what these are the work, okay, these are the work which is considered as the what, considered as the copyright. Okay. Sorry for continue. So this is the copyrights. Okay, copyrights, and this is a legal provision. Okay, that means if someone is violating the copyright, that means he would be what, punished by the legal, आप जो भी कह सकते हो प्रोसीजर जो भी है, ठीक है. तो दिस इज कंसिडर द कॉपीराइट्स, एंड द कॉपीराइट्स इज गिवन फॉर द लिटरेरी एंड द आर्टिस्टिक वर्क और द परफॉर्मेंस, ठीक है. तो बहुत सारी लाइक द बुक्स, राइटिंग, म्यूजिक, novels, paintings, sketchings, sculptures, computer programs, database, okay, etc etc and etc. So इसमें सब आ जाएगा ना, मैप, टेक्निकल ड्राइंग वगैरह सब, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी कंसीडर अंडर द लिटरेरी एंड द आर्टिस्टिक वर्क. ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द पेटेंट्स. नेक्स्ट बात करेंगे अपन अबाउट द पेटेंट्स. अभी मैं इसमें जो लिख रहा हूँ ना क्लास, प्लीज इट्स अ सजेशन फॉर यू गाइज दैट इफ यू वांट टू want to develop your content, okay, under the this, so you can, अब आप जल्दी में अगर नहीं लिख पाते हो तो you can the screenshot, you can take the screenshot, okay, of the display, ठीक है, तो वो आपके लिए सेव हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज द पेटेंट्स. ओके, सो पेटेंट्स इज एक्चुअली, बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ व्हाट, दिस इज ऑल्सो अ लीगली बाइंडेड कॉपीराइट्स, ठीक है. एंड द पेटेंट इज द एक्सक्लूसिवली राइट ग्रांटेड फॉर द इन्वेंशंस, exclusively right granted for, sorry, exclusively
right, granted for what? Inventions. Clear? Okay. So generally, if you are just speaking that a patent provide to the patent owner with the right to decide how or whether the invention can be used by others. ठीक है, एक चीज ध्यान रखना. This is actually provided to the owner, provided to the owner of invention, owner of invention, and this is actually providing the provision regarding the how and whether, how and whether the invention is invention is used by others. Okay, that means कोई भी नया इन्वेंशन किसी ने किया है, क्लियर, सो द पेटेंट वुड बी प्रोवाइडेड टू इन्वेंटर, द वो आप कह सकते हो द रियल इन्वेंटर जो भी होगा उस इन्वेंशन का. एंड इन द अंडर दिस पेटेंट the provisions are here, and the provisions are actually providing the base for the how the invention is used by the others and whether in which condition the invention is used by the others. Suppose that कि अगर वो बंदा जो है वो जिसको पेटेंट मिला है, अगर वो किसी को देना चाहता है ना, तो जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं पेटेंट रूल में, ओके, तो अंडर that provision, under that rule, it he will be transferred the invention, or you can say the new technology, right? Okay, the new invention to the others. Clear? So this is considered the patents. Okay, and in exchange for this right, the patent owner makes technical information about the invention publicly available in the published patent document. ठीक है, तो जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन होगा द ओनर विल बी प्रोवाइड. ठीक है, जो उसका जो भी उसको क्या करेगा, परचेस करना चाहेगा. क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन इज द ट्रेडमार्क. नेक्स्ट वन इज द ट्रेडमार्क. क्लियर? क्या होता है ट्रेडमार्क्स? Actually, trademarks is giving for the specific type of the firms, giving for the firms establishment. जैसे अगर आपने देखा होगा कि ट्रेडमार्क लाइक जैसे गोल्डी मसाला आता है, राइट, तो उसका एगमार्क जो है, ठीक है, वो ट्रेडमार्क है उसका. क्लियर? दैट मीन्स नो वन कैन कॉपी दी सेम ट्रेडमार्क. ठीक है, आप बिल्कुल सेम ट्रेडमार्क को कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है, जिसको ट्रेडमार्क का राइट मिला है. क्लियर? So trademarks is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprise. That means कि जो भी goods and services, ठीक है, given to goods and services enterprise, okay, enterprise from those of other enterprise, from those of other enterprise. अदर एंटरप्राइज. ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो गिवन टू डिस्टिंग्विश, एक्चुअली distinguish, clear, the goods and services of one enterprise from those of other enterprise. Suppose that कि कोई जैसे अब अमूल का मिल्क आता है, राइट, so here is the symbol of Amul. Okay, so this is the trademark of the Amul milk. So no another the milk producing organization, or you can say the milk supplying firm, can never copy the trademark of the Amul milk. ठीक है,
So this is actually consider the distinguish. It is actually for the distinguish in between the good and services of one enterprise from those of the other enterprises जो बिल्कुल उसी के उसी फील्ड में काम कर रहे हैं. ठीक है. तो ट्रेडमार्क डेट बैक टू एंशियंट टाइम्स व्हेन आर्टिसंस यूज्ड टू पुट देयर सिग्नेचर और मार्क ऑन देयर प्रोडक्ट. ऐसा बोला जा रहा है कि जो बहुत ही पुराने टाइम में क्या होता था कि कोई भी वो होता था ना, जैसे कोई बनाने कोई चीज़ बनाने वाला होता था. क्लियर. जब वो कोई चीज़ वो बनाता था तो वो उसमें अपना क्या कर देता था, एक मतलब पर्टिकुलर क्या सील रहता था, वो सील लगा दिया जाता था. ठीक. तो दैट वाज द ट्रेडमार्क ऑफ दैट. ओके. जैसे अगर इफ आई जस्ट टॉकिंग अबाउट द व्हाट द ट्रेडमार्क ऑफ द आउडी कार. ओके. आउडी कार. तो आउडी में जो वो चार छल्ले लगे होते हैं ना. ठीक है. फोर रिंग्स. तो दिस इज द ट्रेडमार्क ऑफ द ऑडी. ओके. BMW का आप सब समझते हो कैसा होता है, मर्सिडीज का स्टार. ओके. तो टाटा का टी. फाइन. तो दिस इज द ट्रेडमार्क ऑफ द पर्टिकुलर organ sorry firm or enterprises. Clear. The next one is the industrial design. Industrial design. What would we consider as the industrial design? So industrial design constitute the ornamental or aesthetic aspect of an article. ठीक है. A design may consist of three-dimensional features such as shape or surface of an article or two-dimensional features such as pattern, lines और color. जैसे आपने ये देखा होगा एडिडास का शूज़. ओके. एडिडास शू. तो एडिडास का जो शूज़ देखा है आपने. क्लियर. तो आपने ये देखा होगा कि उसमें क्या ऐसे तीन पट्टियाँ होती हैं किनारे किनारे. दे आर द थ्री स्ट्रिप्स. थ्री स्ट्राइप्स आर देयर. ठीक है. वो ऐसे शूज़ पे बने होते हैं किनारे किनारे तीन पट्टी. ओके. सो दिस इज द इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. नो वन कैन कॉपी द सेम डिज़ाइन. ठीक है. एज द एडिडास. ओके. तो उसमें डिज़ाइन को भी कॉपी नहीं कर सकता. लाइक जैसे अब नाइकी है ना. तो नाइकी का इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है. वो हर शूज़ में क्या देगा, दिस चेक मार्क. तो चेक मार्क इज द what industrial design of the Nike shoe. Clear. Nike shoe. Fine. So this is considered as the industrial design, and it is constitutes the ornamental or aesthetic aspects of an article. Mostly the ornaments, जो भी ornaments होते हैं. Clear. Okay. तो जो भी ornaments होते हैं ये बहुत आपको देखा होगा कि जैसे तनिष्क के कुछ ऐसे ज्वेलरी है. राइट. तो नो वन कैन कॉपी द डिज़ाइन ऑफ दैट ज्वेलरी. ठीक है. जस्ट सिमिलर टू द तनिष्क. ठीक. तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता. फाइन. तो दिस इज कंसिडर द इंडस्ट्रियल डिजाइन. नेक्स्ट वन इज द जियोग्राफिकल इंडिकेशन. वन ऑफ माई फेवरेट. दिस इज द जियोग्राफिकल इंडिकेशन. ये इंटीग्रेशन बार बार याद आ रहा है मुझे. जियोग्राफिकल इंडिकेशन. ओके. आपने सुना होगा ना GI टैग. क्लियर. GI टैग. दिस इज द जियोग्राफिकल इंडिकेशन. एक्चुअली द जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि दिस इज एक्चुअली डिनोटिंग द ओरिजिन. ठीक है. ओरिजिन ऑफ एनी गुड्स. ठीक है. विच इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया. ठीक है. सपोज दैट इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द GI. ठीक है. तो वी फाइंड दैट लाइक अभी रिसेंट में द कंधमल हल्दी. कंधमल हल्दी. What? This is the GI
this actually got the GI tag of the ओडिशा, कंधमाल हल्दी, ठीक है। तो ये जीआई टैग है कहाँ का? उड़ीसा का, उड़ीसा का। फाइन। सो एट अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द उड़ीसा, ठीक है, दिस कंधमाल हल्दी इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फर्स्टली। तो ओरिजिन का जो क्या बोल सकते हो आप, फर्स्ट जो सॉरी ओरिजिन का जो प्लेस है, मेन प्लेस है, फाइन, तो इट वुड बी कंसिडर एज द geographical area, ठीक है, and for that particular geographical area the GI tag is given to the that particular goods और particular what, कुछ भी हो सकता है, वो क्रॉप्स हो सकता है, कोई गुड्स हो सकता है, ठीक। जैसे बहुत सारे ऐसे जीआई टैग हैं, ठीक है, हमारे पास, लाइक व्हाट, दाल बाटी चूरमा, ठीक है, दाल बाटी चूरमा, दिस इज द व्हाट, दिस इज द जीआई ऑफ द राजस्थान। क्लियर? तो ये कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, फाइन। तो आप ये कह सकते हो कि geographical indications GI and appellations of origin are sign used on goods that have a specific geographical origin, ठीक है, specific geographical origin and possess the qualities, regulation or characteristics that are essentially attributable to that place of the origin. Most commonly a geographical indication include the name of the place of origins of the good. Okay, जैसे जो उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, राइट, तो द कैरेक्टरिस्टिक्स, द आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज, ओके, आर द डिफरेंट, ठीक है, उसका कुछ अलग ही हिसाब होगा, राइट। जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, केसर, ओके, तो केसर आप कहीं का भी खा लो, राइट, बट जो जम्मू का केसर है उसका एक अपना एक अलग ही फ्रेग्रेंस और अपना अलग ही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। तो केसर क्या है, वहाँ का जीआई है, जेएनके का, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जीआई टैक्स इन इंडिया, ठीक है। अभी कुछ इसमें एग्जांपल्स मिलेंगे। अब लाइक द अरुणाचल ऑरेंज, ठीक है, अभी एग्रीकल्चर में मिला, लाइक क्या, अरुणाचल ऑरेंज, ओके। तो अरुणाचल ऑरेंज इज व्हाट, दिस इज द जीआई, इट गॉट द जीआई टैग फॉर द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। तो अरुणाचल ऑरेंज इज अ व्हाट एग्जांपल ऑफ द, इसी तरह से बहुत जैसे अल्ला गड्ढा स्टोन कार्विंग, ठीक है, एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज अ हैंडीक्राफ्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, ठीक। बहुत सारे ऐसे, जैसे सम मैंगोज आर हियर, बाना गाना पल्ले मैंगोज, दिस इज द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, गॉट द जीआई टैग ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड द तेलंगाना। कंदमन हल्दी, ठीक है, फॉर द ओडिशा, उड़ीसा, ठीक है। तो these are the what, these are the GI tags, this is considered the GI tags. So next one is the ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था ना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके, सो लाइक दिस सीक्रेट, सो हियर इज व्हाट, द नेक्स्ट वन इज द ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, ओके। So trade secrets are the intellectual property rights on confidential information which may be sold or licensed, ठीक है, जिसको क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, ठीक है, which may be sold और लाइसेंस, उसको या तो फिर लाइसेंस करा लिया जाता है पर्टिकुलर किसी मतलब किसी के नाम से, ठीक है। तो द अनऑथराइज्ड एक्विजिशंस, यूज और डिस्क्लोजर ऑफ सच सीक्रेट इंफॉर्मेशन इन अ मैनर contrary to honest commercial practices by others is regarded as unfair practice and the violation of trade secret protection, okay, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर कोई सीक्रेट है तो वो किसी के द्वारा क्या कर लिया जाता है,
चुरा लिया जाता है, एंड दे आर एक्चुअली यूजिंग दैट दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिगार्ड्स एज एन अनफेयर प्रैक्टिस। सपोज करो कि जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कोई ट्रिपल पी करती है गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, and here is any special firms are here. Suppose karo if the Tata is what, Tata is the uh, company, private company, which is actually what, actually taking the responsibility, ठीक है, regarding the research practices for the nuclear science, ठीक है, you can consider for the nuclear energy, ठीक. So there is a trade secret. That means कि for the development of the nuclear reactors, for the development of the nuclear technology, ठीक है, there are the some specific technology as well as the specific kind of the premises would be established, ठीक है, for the energy production through the nuclear energy. अब ऐसे कंडीशन में अगर कोई दूसरा जो है उस स्टेट सीक्रेट को चुरा ले, तो ही कैन यूज दैट टेक्नोलॉजी, दैट सीक्रेट, ठीक है, फॉर द आप कह सकते हो कि अनफेयर प्रैक्टिसेस। दैट मीन्स कि सब कुछ सारी टेक्नोलॉजी को क्या कर ले, चुरा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा फिर, वो एटम बम बना सकता है। क्लियर? तो दिस इज कंसिडर द ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है। तो दीज आर द सम क्या है, दीज आर सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, तो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज वेरी नेसेसरी एंड वेरी मेजर कंसर्न एक्चुअली। फाइन। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स, बहुत सारे ऐसे ट्रीटीज हुए, ओके, विच इज प्रोवाइडिंग द प्रोविजंस रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और यू कैन से रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर? तो यहाँ पे हम कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक, रिलेटेड टू द आईपीआर। Like the first one is the TRIPS agreement। क्लास देखो, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट एज पर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या है, रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसलिए मैं आपसे ये डिस्कस करते हुए चलता हूँ। दिस इज द ट्रिप्स एग्रीमेंट। क्लियर? सो ट्रिप्स इज एक्चुअली stand for the agreement on the trade related aspects of intellectual property rights। Okay, intellectual property rights, this is the full form of the TRIPS, the trade related aspects of the intellectual property rights। ठीक है, अच्छा। देयर इज अ what, आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज द WTO। ठीक है, WTO इज हियर स्टैंड फॉर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ओके, द ट्रेड दिस ट्रिप्स एग्रीमेंट is actually a legal sign, or you can say a legal agreement between the nations, all the member nations of the WTO। ठीक है, WTO member nations। Clear? If any state or any nation is the member of the WTO, okay, so the TRIPS is a legal agreement, ठीक है, which is
साइंड बाय द ऑल मेंबर्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ। ठीक, तो जो भी मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, ये ट्रिप्स को साइन करेंगे, एंड द प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय द ट्रिप्स वुड शुड बी फॉलोड बाय द नेशंस इन देयर ओन टेरिटरी। ठीक है, वहाँ पे जो भी अपने जो नेशंस होंगे वो उसके सारे भी प्रोविजंस को क्या कराएंगे, अपनी कंट्री में फॉलो अप कराएंगे। फाइन। सो इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द, so what is the main aim of this TRIPS agreement? So it stipulates the minimum standards in the international rules governing patent that member countries have to enact। ठीक है, दैट मीन्स ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है, रिगार्डिंग द पेटेंट। ठीक, और वो जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, ठीक, उसको इनैक्ट कराना पड़ता है फॉर बाय दी ऑल दी नेशंस ऑफ द WTO या ऑल दी मेंबर नेशंस ऑफ द WTO। Okay, in the year of the 1994, just a second, एक इंफॉर्मेशन और आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखो, पहले आप ये समझो why the TRIPS, you can say how the TRIPS agreement is actually generated or negotiated। ठीक है, so there was in the year of the 1994, okay, there is a Uruguay। ठीक है, उरुग्वे, एक सेकंड, हाँ, उरुग्वे, हाँ, देयर इज अ उरुग्वे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उरुग्वे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ GATT, GATT। What is the GATT? GATT is actually stand for the General Agreement General Agreement। ठीक है, on traffic and trades, okay, this GATT actually comes in the reality in the year of the 1947। ठीक है, 1947 में ये GATT आया था। दिस इज द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड द ट्रेड। दैट मीन्स कि अगर किसी कंट्री का एक दूसरे से क्या है, ट्रेड रिलेटेड कुछ भी अगर साथ में काम कर रहे हैं, तो दिस इज द गैट विच इज प्रोवाइडिंग द प्रोविजंस रिगार्डिंग द ट्रेड्स। ओके, सो दिस इज कंसिडर्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन मतलब एक जनरल एग्रीमेंट तो होगा ही होगा। ठीक, अंडर दिस GATT क्या बोल सकते हैं उसको, एग्रीमेंट। फाइन। उसके बाद अगर किसी देश के प्रति बहुत ज़्यादा क्या है, आपस में पर्टिकुलर बायलैटरल जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड करता है कि कोई भी स्पेशल प्रोविजंस वो उसमें क्या कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, क्लियर, रख सकते हैं। ओके, तो GATT, देयर वाज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन द 1994। ओके, एंड एट दिस टाइम द ट्रिप्स इज एक्चुअली नेगोशिएटेड। ठीक है, द ट्रिप्स इज अराइजिंग एट द टाइम, and from the 1994 the TRIPS is TRIPS is generated or originated, ठीक है, or created, and by the year of 1994 it comes into force। ठीक है, तो 1995 से क्या हुआ कि इसके सिग्नेटरी कंट्रीज जो है वो इसको साइन करना स्टार्ट कर दिए। ठीक, तो अप्रैल 1994 में ये कन्वेंशन हुआ था। ठीक, उरुग्वे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फाइन। So after the at the end of this conference, ठीक है, this TRIPS comes, ठीक है, into light। okay, came into light, and ये इसमें एक चीज बात और कही गई कि it would be administered by the WTO। ठीक है, तो ट्रिप एग्रीमेंट would be administered by WTO। तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके,
So here is some requires, that means TRIPS requires the member states to provide the strong protection for the intellectual property rights, for example under TRIPS. ठीक है, अब इसमें TRIPS में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं कि इफ एनी नेशन इज साइनिंग द what signing the TRIPS agreement, okay, so what are the point would be considered, ठीक है, by that nation. ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे द पॉइंट्स आर हियर लाइक ठीक, the points are here like copyright term must extend at least 50 years unless based on the life of author. ठीक है, बोल रहे हैं copyright terms provisions of the TRIPS, okay, copyright terms must extend at least 50 years. Must extend at least 50 years unless based on the life of the author. Based on the life of the author. Okay. इसका कहना मतलब ये है कि अगर इफ द ऑथर इज एक्चुअली पब्लिश्ड अ न्यू बुक, ओके, अगर उसने कोई नई बुक लिखी है, तो हियर इज द टर्म फॉर द extension of the copyrights, okay, so this is providing the provision for at least 50 years extension. ठीक है, 50 years extension अनलेस बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर की, जो कि मतलब ऑथर की डेथ पर जो है बेस नहीं है कि भाई अगर ये 30 साल ही जिएगा तो मतलब क्या मतलब 50 ईयर्स का देगा, नहीं, 50 ईयर्स उसको देना ही देना है एटलीस्ट. ठीक है, कम से कम 50 ईयर्स का एक्सटेंशन फॉर द कॉपी राइट टर्म्स. ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि अगर उसके बाद वो मर जाएगा तो फिर उसको कौन, मतलब उस कॉपीराइट का केयर टेक कौन करेगा. फाइन, तो अगर वो ऑथर जाता है तो ऑथर विल बी प्रोवाइड द विल्स. ठीक है, हिज विल्स, तो उसकी जो भी विल्स होगी तो उसमें वो चीज़ मेंशन होगा कि कौन अब इसको आगे कैरी करेगा. फाइन, तो बिल्कुल ऐसे प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, विल्स तैयार की जाती है ना. द सेम थिंग इज हियर. ओके, द सेकेंड वन इज दैट द कॉपीराइट मस्ट बी ग्रांटेड ऑटोमेटिकली एंड नॉट बेस्ड अपॉन द फॉर्मली सच एज registration as specified in the Berne Convention. Okay, must be granted automatically. ठीक, मतलब ये बोला जा रहा है कि जो कॉपीराइट होगा, फाइन, उसको ऑटोमेटिकली उसको ग्रांट कर दिया जाएगा. ठीक है, जबकि बोल रहे हैं कि कोई स्पेशल टाइप का कोई उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं, नॉट बेस्ड अपॉन एनी फॉर्मेलिटी. ठीक, कोई उसमें फॉर्मेलिटी नहीं है सच एज कि जैसे रजिस्ट्रेशन हो किसी स्पेसिफाइड. ठीक है, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऑटोमेटिकली उसको दे दिया जाएगा, कॉपीराइट ग्रांट कर दिया जाएगा. फाइन, कंप्यूटर प्रोग्राम मस्ट बी रिगार्डेड एज लिटरेरी वर्क अंडर कॉपीराइट लॉ एंड रिसीव द सेम टर्म ऑफ द प्रोटेक्शन. इसमें यह बोला गया द कंप्यूटर प्रोग्राम्स ओके विल बी ट्रीटेड एज द लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क. ठीक है, अ लिटरेरी वर्क एक लिटरेरी वर्क की तरह ये ट्रीट किया जाएगा अंडर द कॉपीराइट लॉ एंड रिसीव द सेम टर्म ऑफ प्रोटेक्शन. ठीक है, रिसीव सेम प्रोटेक्शन. ओके, दैट मीन्स इफ समवन हैव डेवलप्ड अ new computer program, okay, a new computer software, so this is also considered as the literary work. ठीक है, and
the provisions which is provided for the protection of the another literary work, like the novel publication, like a book, मतलब कि a written book, ठीक है, any novel, any journals, okay. So same protection would be provided for the protection of the computer program, okay. Next is the patents must be granted for the invention in field of technology, ठीक है. अब देखो पेटेंट्स के बारे में बोल रहा है ये, अभी तक ये कॉपीराइट की बात हो रही थी. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द पेटेंट, ओके. पेटेंट must be granted for inventions, granted for inventions, okay. That means if someone is invented any new invention, okay, so patent must be granted for that, मतलब उसको पेटेंट मिलेगा ही मिलेगा. क्लियर, ओके. एंड इन ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बोल रहे हैं इन्वेंशन इन ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी. दैट मीन्स कि जो हमने जितने भी अभी तक आपको टेक्नो क्या पढ़ाए हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड्स पढ़ा है, लाइक द बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आईटी एंड कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो ऑल काइंड्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी would be considered under this if anyone is actually what developing, or you can say uh, if anyone is actually done the new invention, okay, so he must be provided the patent, clear, for that invention, fine. तो यहाँ बोल रहा है कि provided they meet all other patentability requirements, although exception for certain public interest are allowed, ठीक है. चलो ये कोई मतलब नहीं है. No unreasonable prejudice to the legitimate interest of the right holders of computer programs and the patent is allowed, okay. In each state, intellectual property law may not offer any benefits to the local citizens who are not available to the citizens of other TRIPS signatories under the principle of national treatment with certain limited exceptions, okay. TRIPS also has a most favored nation clause. हाँ, ये बोल रहे हैं कि जो MFN वाला जो बात होती है, दिस इज द MFN. MFN इज स्टैंड फॉर द मोस्ट फेवर्ड नेशन, ओके. जैसे इंडिया ने प्रोवाइड कराया था किसको, पाकिस्तान को, बहुत सालों तक मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में रखा था, ओके. तो द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज इज also what, this clause is also mentioned in the ट्रिप्स, ठीक है. तो मोस्ट फेवर्ड नेशन में जो भी कुछ चीज़ें अगर आपस में क्या कर सकते हैं, ट्रेड रिलेटेड कुछ भी शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक, अंडर दैट क्लॉज, ठीक है. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं और आप इसको देख सकते हो, ओके. तो दिस इज द कंसिडर द ट्रिप्स, ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट द विपो. विपो इज अ स्टैंड फॉर द व्हाट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो, ठीक है. विपो इज हियर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. अब ऐसे लिखते, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ओके.
So if we are just talking about the organization is actually established in the year of 1967. Established in the 1967. कहाँ पर? Stockholm. Clear? 1967. Stockholm began operation in the 1970 and became a specialized agency of the United Nations in 1974. ठीक है? The headquarter is where? In Geneva. Okay. And from the year of 1974, ठीक है, from the year of 1974, it became a specialized agency of the became a specialized agency of United Nations, UN, United Nations, UN. Okay. So 1974 में he have got the what badges of the United Nation Specialized Agency. Okay, and from the uh, established in the 1967, and from the 1970 it started the operation. Started its operation. So World Intellectual Property Right is a what? It a special agency of the UN. ठीक है. This is the one of the 15 स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ठीक है, अगर टोटल एजेंसी की बात करें यूनाइटेड नेशन की तो किस में आते हैं? कितने आते हैं? 15, जिसमें सारे आपके WTO, WHO, ठीक है, एंड दिस वीपो ऑल्सो. तो लाइक दिस देयर आर द 15 agencies, 15 special agency of the United Nation. So this is the global forum for the intellectual property service policy, information and the cooperation, and it is a self-funding agency of the UN with 191 member state. That means कि अभी तक बात करें कि how many members states are here. So in the WIPO there is 191 members state are here. Members state. ठीक है. कितने? 191 members. And this is actually stand for the intellectual property services. ठीक है, policy, information and the cooperation. That means it would be decided that which one is considered as the intellectual property. Okay, intellectual property, and what is the policy, ठीक है, to protect the intellectual property rights. ठीक. Okay, means the right would be provided for the intellectual property and what are the process actually. ठीक है, क्या policy हैं, क्या rules हैं, क्या norms हैं. ठीक है, all of the things would be decided by the World Intellectual Property Organization. Okay, so 191 members countries are the member of this what World Intellectual Property Organization, and the mission is to lead the development of a balanced and effective international intellectual property system. ठीक है, what is the aim of this? तो aim में आप ऐसा लिख सकते हो, the aim of this the aim of this organization is to develop the balanced a balanced and effective international and effective IPR system. IPR system. That means that enables the innovation and the creativity for the benefit of all. Okay, एक तरीके से बात किया जाए तो this WIPO organization is the governing, or you can say the authoritative organization, authority body over the intellectual property rights. Okay, the main aim is actually denoting the purpose of the
purpose of the establishment of this organization. That means this organization is aiming that developing a balanced and the effective IPR system. इसका मतलब ये है कि जितने भी तरीके के आईपीआर एग्रीमेंट्स होंगे, जो पॉलिसीज होंगी, जो रूल्स होंगे, जो कंट्रीज आईपीआर डब्ल्यूआईपीओ के सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, क्लियर, उनकी उस कंट्री के टेरिटरी में व्हाट काइंड्स ऑफ द आईपीआर, ठीक है, इज प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइडेड इन द पास्ट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कंप्लीट गवर्न करेगी, ठीक है, तो द ऑर्गेनाइजेशन इज द WIPO. ओके, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द WIPO, इसके क्या क्या रोल हो सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं रोल ऑफ वीपो, क्लियर, रोल ऑफ वीपो। तो एक्चुअली देखो, मैंने पहले ही बोला कि वीपो इज हियर प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। दैट मीन्स कि किसी का इंटरेस्ट उसमें क्या हो, क्लैश नहीं करना चाहिए, किसी का इंटरेस्ट उसमें बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक। तो बाई क्रिएटिंग अ कोऑपरेशन बिटवीन द नेशंस, ओके, तो बाई क्रिएटिंग द इंटरनेशनली कोऑपरेशन, ठीक है, दिस इज इंश्योरिंग द व्हाट, इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। इट प्रमोट्स द, ऐसे लिख सकते हो आप, द वीपो promotes the protection of IP with international cooperation, with international cooperation, ठीक है। अगर मान लो कि किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट यहाँ होता है, if any person have invented a technology, ठीक है, and he is claiming for the property rights IPR, okay, at the same time, ठीक है, the person from another country also claiming for the credition of the same technology, okay, so what should happen, अब वो उसमें होगा क्या है, अब वो मैं नहीं जानता हूँ, वो कोई नहीं जानता, बट इट वुड बी डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बट विद द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो उसमें वो दोनों मेंबर कंट्रीज, सॉरी दोनों कंट्री से वो बात कहा, मेंबर कंट्री भी कह सकते हो क्योंकि मेंबर कंट्रीज, ओके, तो वो दोनों मेंबर कंट्रीज से क्या करेगा, टॉक करेगा, एंड इट वुड इस्टेब्लिश अ डायलॉग बिटवीन द नेशंस, एंड आफ्टर दैट conclusion will be what, resulting by the dialogues, okay, तो उसमें जो भी conclusion निकलेगा उसके बेसिस पे उसको क्या कर दिया जाएगा, IPR प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ओके, so here is the WPO supervise the administrative cooperation between Paris, Bern and other intellectual unions regarding the agreement in the trademarks। अभी ये पेरिस, बर्न, मैड्रिड, ओके, all will have to be discussed here, ठीक है, like the what the Bern convention, what is the Bern convention and what kind of the provisions is provided by the convention in the Bern, okay, what are the Paris convention provisions, okay, Madrid agreement, what is the Madrid agreement, ठीक है, पेटेंट कोऑपरेशन, क्या बोल सकते हो उसको आप, ट्रीटी, ओके, तो इन सब के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या है कि जो WPO है ना, WPO, ओके, एक्चुअली दी सुपरवाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन, ठीक है, बिटवीन ऑल द एग्रीमेंट। सपोज दैट कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अनदर एग्रीमेंट्स एंड द WIPO, ठीक, जैसे बर्न कन्वेंशन में कोई अगर प्रोविजन है, ओके, एंड this provision is countering the provisions of the WIPO, or you can say that this is actually क्या बोल सकते हैं, काउंटरिंग द प्रोविजंस गिवन इन द मैड्रिड ट्रीटी, ठीक है, मैड्रिड डिक्लेरेशन, ठीक है। तो उस कंडीशन में द WIPO वुड बी रोलिंग एज अ मीडिएटर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मीडिएशन का काम करेगा
एंड जो भी उनके बीच में जो भी काउंटर हो रही थी चीज़ें, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टी हो थी, तो वो WIPA के द्वारा क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा या सॉर्ट आउट किया जाएगा. फाइन. ओके. तो WPO's role in enforcing the IP protection increased in the mid 1990s. ठीक है, when it signed a cooperation agreement with the World Trade Organization. Okay. So in the year of the 1990s, ठीक है, 1990s, the work of WIPO for IP protection, ठीक है, for the IP protection is actually क्या बोल सकते हो आपको, increases. ठीक है, increases and इस समय और क्या हुआ था, it signed the agreement with the WTO. Agreement with WTO. This is the World Trade Organization. क्लियर. तो उसने क्या किया कि इसी ईयर में क्या किया, तो उसके बाद से क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द गैट, ओके, द जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ्स एंड ट्रेड. ठीक है. तो अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगे. फाइन. तो इन दैट केस द WPO, ठीक है, started playing a vital role. ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर द क्या बोल सकते हैं, फॉर सॉर्ट आउट द टाइप्स ऑफ द डिस्प्यूट्स. ठीक है. तो उसमें फिर वो एरा कब का था, 1990s का. क्लियर. सो हियर इज WPO's membership consist of more than 180 countries. ठीक है. एंड इट्स हाँ 191 हमने बोला ना, तो मोर देन 180 कंट्रीज. ओके. So its policy making is done in the General Assembly with convene every 2 years. ठीक है. That means कि every 2 years यहाँ पे every 2 years. ठीक है. The policy would be revised. ओके. जो भी पॉलिसीज हैं उनको क्या किया जाएगा, हर दूसरे साल में उसको रिवाइज किया जाएगा. ठीक है. किसकी पॉलिसीज, द पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. So here is the some strategies adopted by the member states and the organizations include. Okay. यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज दी हुई हैं. ठीक है. एंड स्ट्रेटजीज इज ऐसी स्ट्रेटजी जो कि किसके द्वारा, मेंबर कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अडॉप्ट की गई हैं. ठीक है. लाइक जैसे कुछ स्ट्रेटजी, और ये स्ट्रेटजीज को अश्योर कौन करता है. ठीक है. दिस kind of the strategy would be assured by the WPO. ठीक है. So here are the some strategies. Like the first point in the strategies, like the developing a global IP infrastructure. Developing a global IP infrastructure. Okay, infrastructure. That means globally, if any types of the intellectual property is available for the license, for the copyright, for the patent. Okay. So this is the strategies to develop the what infrastructures regarding that intellectual property by the member states. ठीक है, member states of the WPO and by the organizations. Clear. Okay. So the next one is a building international respect for the intellectual property.
building international respect, international respect for इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कैसे? जैसे सपोज करो, आपने देखा लाइक मैन बुकर अवार्ड, मैन बुकर अवार्ड, ठीक है। तो मैन बुकर अवार्ड इज व्हाट, दिस इज अ, क्या ये एक तरीके का अवार्ड है, और ये ग्लोबली एक्नॉलेज्ड अवार्ड है। ओके, सपोज दैट कि पूरे वर्ल्ड में किसी को एट अ टाइम, किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई एक ऐसा होगा, ठीक है, कोई एक ऐसा होगा जो, जिसको ये मैन बुकर अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली रिस्पेक्ट रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दिस इज, ये क्या एक तरीके का, एक तरीके का रिस्पेक्ट है। अगर कोई ऑथर है, वो कोई बुक्स अगर लिखा है, कोई बुक लिखा है वो, ठीक है, तो उसको इंटरनेशनली रिस्पेक्ट देने के लिए क्या है, मैन बुकर अवार्ड। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्ट्रैटेजी ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग द इंटरनेशनल रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब वो जो भी बुक लिखा है, जो भी नॉवेल लिखा है, ठीक है, वो किसकी प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर दैट ऑथर की, ठीक है। वो ऑथर कहीं का भी हो सकता है, ठीक है, इंडिया का हो सकता है, यूएस का हो सकता है, किसी अफ्रीकन कंट्रीज का हो सकता है, किसी भी यूरोपियन एशियन कंट्रीज का हो सकता है, फाइन। एंड ही गॉट द व्हाट, इंटरनेशनल मैन बुकर अवार्ड, क्लियर। so this kind of the activity is actually what, actually क्या बोलना, उसको क्या बोल सकते हैं कि एक सम्मान व्यक्त करना है। हिंदी में बहुत अच्छा लगता है सुनने में ना, कि इनको सम्मान दिया गया, इनको सम्मानित किया गया, फाइन। सो रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, फाइन, फॉर दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन्वेंशन के लिए क्या देना, प्राइज देना, इन्वेंशन के लिए भी क्या, प्राइज देना, फाइन। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो a types of the respect providing, globally respect providing. Hmm. uh, Next is the supporting structures used to facilitate financial and administrative function. प्लस जो भी इसमें पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को अगर आप लिख लोगे, ओके, so if you are just started the answer writing and the questions are regarding the IPR, ओके, तो आपकी चीज़ें उसमें से मिस नहीं होंगी, क्लियर। सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर्स यूज टू फैसिलिटेट, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू facilitate, used to facilitate financial and administrative function, financial and administrative functions, okay, that means in the strategy, okay, यहाँ पे बात की जा रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ओके, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, दैट मीन्स कि ऐसे सपोर्ट, जैसे किसी को क्या, किसी को फाइनेंशियल नीड की, फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड है, फाइन। तो इन दैट केस कुछ ऐसे कमीशन, कुछ ऐसे ग्रांट कमीशंस को क्या करना, इस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो दिस इज कंसिडर एज द वर्ड द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग द ग्रांट, फॉर प्रोवाइडिंग द मनी फॉर द पर्पज ऑफ द इन्वेंशन, ओके।
So this is also a strategy of the WIPO members state, okay, and the organization. ठीक, जैसे अब क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, okay, so these are the some organization which is actually providing the providing the financial support, ठीक है, to the nations, ठीक। तो ऐसे ही कुछ ऐसे व्यवस्था, वैसे ही कुछ प्रोविजंस को डेवलप करना, ठीक है, which is providing the supporting structures and which used to facilitate the फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, उसके फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को क्या करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। फाइन, द नेक्स्ट वन इज द इम्प्लीमेंटिंग अ ग्लोबल पॉलिसी इशू रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इम्प्लीमेंटिंग अ ग्लोबल पॉलिसी इशू ठीक है, a global policy issue related to intellectual property, related to intellectual property, okay, that means एक ग्लोबल पॉलिसी, ठीक है, को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग अ ग्लोबल पॉलिसी, सॉरी, ग्लोबल पॉलिसी, ठीक है, इशू रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक। तो एक ग्लोबल पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, तो उस पॉलिसी के तहत, ठीक है, क्या हो सकेगा, द इशू रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी इश्यूज होंगे, ठीक है, फॉर द टैकल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द, यू कैन से टू टैकल द इश्यूज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, ग्लोबली, ठीक है। तो दो the development of the this kind of the global policy is necessary, and this is also a strategy of the state members of the WIPO and the organizations as well, okay, so these are the strategies, ठीक। ये कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी में दो चार पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। फाइन, ओके, हियर आफ्टर द ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है, after the WIPO, there is some international treaties, some international treaties, ठीक है, and these treaties are related to the IPR, related to IPR, okay. So there are the different subject matters of the intellectual property like the patents, copyright, trademarks, ठीक है, or you can say the industrial design, plant varieties, etc, ठीक है। So there is the need for the protection in these different subjects arose in the different period। दैट मीन्स कि यहाँ बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स, मतलब इनसे रिलेटेड, इनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स अराइज होते हैं, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन, ओके, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें। फाइन, तो हियर इज देयर इज आर द टू मेन बॉडीज, द फर्स्ट वन इज द WIPO अंडर द UN, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज द रेस्ट वन इज द WTO एंड द UNESCO, ठीक है। So UNESCO and WTO is also here for the administration purpose regarding the intellectual property right. Okay. So apart from these WIPO, WTO, UNESCO, okay, here are some another treaties and the convention is here which is also providing the protection of the intellectual property rights, ठीक है। जैसे अभी हमने उसमें बात किया था कि बर्न कन्वेंशन, इनके बीच में जो कॉपरेशन करने का काम WIPO का है,
तो अब नाउ वी टॉक अबाउट द व्हाट इज द बर्न कन्वेंशन. ठीक है. व्हाट इज द व्हाट इज द मैड्रिड एग्रीमेंट, व्हाट इज द पेरिस कन्वेंशन. ठीक है. चलो तो इस पर हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं. लाइक द फर्स्ट वन इज द पेरिस कन्वेंशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. पेरिस कन्वेंशन फॉर इंडस्ट्रियल property, and this treaty was done in the 1883. Okay. So since it deals actually only with the industrial property, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि this treaty deals only with industrial property. Okay, that means the intellectual property related to the industrial sector is deals under this convention. Okay, and from the first day of this treaty in the year of the 1883, ठीक है, the industrial property is deals under the Paris Convention. Okay, so it covered the patent and the trademarks. अब obvious सी बात है कि deals with the industrial property, that means it covered the patent patents and trademark Okay, तो पेटेंट जो है वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती है, एंड ट्रेडमार्क इज ऑल्सो इंश्योरिंग द वॉट प्रोटेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज. फाइन. तो आप ये बोल सकते हो कि इट वॉज among the first treaties to recognize various principles of international trade, like the national treatment, right of priority, common rules, etc. ठीक है. हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो द फर्स्ट ट्रीटीज टू रिकॉग्नाइज वेरियस प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड. हाँ, यस, दिस इज द वेरी फर्स्ट ट्रीटी. दिस इज द कंसिडर एज द फर्स्ट ट्रीटीज. ठीक है. regarding the issues related to international trades. Okay, or also consider as the some national treatment, right of priority, common rules, etc. that means कि अगर कोई दो स्टेट के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है, ओके, तो व्हाट आर द कॉमन रूल्स, ठीक है, आर अवेलेबल फॉर द फैसिलिटेटिंग द ट्रेड बिटवीन द टू स्टेट्स. ओके, so in that case the Paris Convention is considered for the Paris Convention for industrial property is considered as the very first treaties. ठीक है. So this one is the very first treaty. ठीक है. चलो, the next one is the okay. So here the next one is the Bern Convention for literary and the artistic works. देखो, नाम से ही पता चल रहा है किस किस के लिए है. द बर्न कन्वेंशन फॉर लिटरेरी एंड artistic work. Okay, artistic works, and this treaty was a convention was held in the year of the 1886, and it is provider for the copyright system. Obvious सी बात है, copyright is provided for the literary and the artistic works. So this is a provider for copyrights. ठीक है, it's a provider of copyright system.
you can say this is the provided for copyright system. Clear? तो हम ये कह सकते हैं कि it does not provided for any formality to claim the protection. Okay, and protection is automatically according to any creation provided the work is original and other conditions under the treaty are fulfilled. Okay, it means that your work, if original, is already protected. You can claim that you have copyright. ठीक है? तो अगर आपका वर्क जो है, जो भी आर्टिस्टिक वर्क हुआ है, जो भी आपका कोई भी, अगर सपोज दैट इफ यू आर ऑथर एंड यू हैव राइटिंग एनी बुक, ओके, यू हैव रिटन एनी बुक, एंड इफ you are a singer, you are any artist, you are considered under any artist, and you have done any artistic work. Okay, so this is very much sure that this property is yours. Okay, if this is original, so you are already protected. You are already protected. आपने देखा होगा ना, जैसे कि बहुत सारे ऐसा हुआ है कि कोई नया गाना बना, ठीक है, उसका म्यूजिक आया, तो कोई पीछे से आकर के कोई म्यूजिशियन बोलता है कि इन्होंने मेरी म्यूजिक क्या कर ली है, चुरा ली है, कॉपी कर ली है. ओके, वो जब म्यूजिक बनाया था तब वो कॉपीराइट नहीं था उसके पास. ओके, बट अकॉर्डिंग टू दिस बर्न कन्वेंशन, ओके, इफ यू आर ओरिजिनल and you are giving the proof of originality of your artistic work, okay, so you are already protected. ठीक है, तो आप ऑलरेडी क्या है, प्रोटेक्टेड है. जैसे अभी वो 3 इडियट्स जब आई थी ना मूवी, तो 3 इडियट्स मूवी आई थी, तो चेतन भगत हैव क्लेम्ड दैट कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय नोवेल. उन्होंने बोला कि ये हमारे नॉवेल की स्टोरी है और ये इन्होंने चुराया विदाउट माय कंसेंट. ठीक है, सो दैट, तो उस पर क्या बहुत बहुत सारा बवाल हुआ था कि हाँ ये भाई ये कॉपीराइट का क्लेम कर रहे हैं कि हमारे नॉवेल्स को ये क्या कर दिया, हमारी नॉवेल्स की स्टोरी को हमारे कंसेंट के बगैर ये यूज़ कर रहे हैं. फाइन, तो ये दिस इज व्हाट चेतन भगत हैव क्लेम्ड, ठीक है, ऑन द बाय द प्रोटेक्शन गिविंग बाय दिस ट्रीटी बर्न कन्वेंशन. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बिना पे क्या किया उन्होंने क्लेम किया था. फाइन, तो द नेक्स्ट वन इज द मैड्रिड एग्रीमेंट 1881. ठीक है, ओके, मैड्रिड एग्रीमेंट. मैड्रिड एग्रीमेंट 1881. फाइन, तो इट गवर्न्स द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडमार्क. ठीक है, इट गवर्न्स the international recognition of trademark. Okay, of trademark. It made international filing easy and cheap. It made international filing easy and cheap. Okay, हाँ देखो, this one is the Madrid Agreement 1881. So Madrid Agreement is here stand for the protection of the trademarks. Okay, protection of the trademarks. Any types of the logo, ठीक है, of any firm or any company, ठीक है, any types of the trademarks of any firms or company is protected under this agreement, which is considered as the Madrid Agreement. Okay, जैसे कि अगर गूगल का लोगो है, ठीक है, द लोगो ऑफ द गूगल, आप सब जान रहे हो. इंस्टाग्राम का अपना लोगो है, फेसबुक का अपना लोगो है. फाइन, so the logo, or you can say this is the trademark of the Instagram, trademark of the Facebook. So this logo is protected under this agreement, and this is made the international filing easy and the cheap. ठीक है,
अगर कोई किसी तरीके का वो होता है, तो अंडर दिस मैड्रिड एग्रीमेंट दिस इज़ वेरी इजी प्रोसीजर कि आप उसके ऊपर क्लेम करो कि ही इज़ एक्चुअली, ही और सी और दे आर यूजिंग एक्चुअली योर ओन लोगो, ठीक है, आपका खुद का लोगो वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी आप जिस इंस्टीट्यूट्स के थ्रू आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का अपना लोगो है, ठीक, तो नो वन कैन स्टील द इंस्टीट्यूट्स लोगो, ठीक है, कोई भी अदर इंस्टीट्यूट अगर इसको लोगो को क्या करता है, कॉपी करता है या चुराता है, और विदाउट द इंस्टीट्यूट कंसेंट, ओके, तो इन दैट केस द प्रोविजंस, ठीक है, वुड बी कंसीडर अंडर द मैड्रिड एग्रीमेंट, जो भी उसमें ऑफेंसेस पेनाल्टी जो भी वट एवर जो भी होगा, सब मैड्रिड कन्वेंशन मैड्रिड एग्रीमेंट 1880 के अंडर में कंसीडर किया जाएगा। फाइन। द नेक्स्ट वन इज अ पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी 1970। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ओके, 1970, 1970। So it was the earlier not possible for an entity to claim protection in the different countries, ठीक है, एक second, by a single application. This was made possible as it aimed for cooperation and it was open for all parties to Paris Convention, ठीक है। अब देखो, this is this is the patent cooperation treaty signed in the 1970, okay, so it is here stable, you can say available for the protection of the patents, for the protection of patent, क्लियर, ये बात आई समझ में, ओके। पहले ये क्या था कि इट वाज अर्लियर नॉट पॉसिबल फॉर एन एंटिटी टू क्लेम प्रोटेक्शन इन द डिफरेंट कंट्रीज बाय अ सिंगल एप्लीकेशन, ठीक, तो पहले ऐसा था कि जैसे अगर कोई पेटेंट आपने किया है, ठीक, सपोज दैट इफ यू हैव पेटेंट फॉर एनी वन, फॉर एनी इन्वेंशन, ठीक, एंड some another person from another country is actually using your technology, using your invention without your consent, okay, so this patent cooperation treaty is providing the protection regarding that, but you cannot, you can say under this patent cooperation treaty, under this treaty, it this is not providing the claim of protection, ठीक है, क्लेम ऑफ प्रोटेक्शन इन दैट सिचुएशन, दैट मीन्स कि द कंट्रीज आर डिफरेंट। तो पहले ऐसा नहीं था कि अगर मतलब दो अलग अलग कंट्री हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो ये किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन क्लेम करने का प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करता था, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम दिस वाज मेड पॉसिबल एज इट एम्ड फॉर कोऑपरेशन एंड इट वाज ओपन फॉर ऑल पार्टीज ऑफ द पेरिस कन्वेंशन। दैट मीन्स कि पेरिस कन्वेंशन में जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी पार्टीज हैं, ओके, इट इज नाउ प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन रिगार्डिंग द पेटेंट्स टू ऑल द पार्टी मेंबर्स ऑफ द पेरिस कन्वेंशन। अब किसी भी, अगर जैसे पेरिस कन्वेंशन का कोई मेंबर है, उनके बीच में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, ठीक है, फॉर द इसको लेकर के, ठीक है, फॉर द पेटेंट, ओके, तो दिस ट्रीटी इज प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन रिगार्डिंग दैट, ठीक, पहले ऐसा नहीं था, ओके। द नेक्स्ट वन इज द बुडापेस्ट ट्रीटी ऑफ द 1980। नेक्स्ट वन इज द बुडापेस्ट ट्रीटी ऑफ 1980, बुडापेस्ट ट्रीटी ऑफ 1980। देखो, इट मेड पॉसिबल पेटेंटिंग फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर द पेटेंट्स, ठीक, एंड बोल रहे हैं कि इट मेड द पॉसिबल पेटेंटिंग फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्लेमेंट इज रिक्वायर्ड to deposit his invention on microorganisms with an authority
इंटरनेशनल डिपॉजिटरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर WIPO. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि इफ एनी टाइप्स ऑफ द व्हाट, एनी टाइप्स ऑफ द इन्वेंशन, or you can say the discovery is done under the topic which is considered the microorganism. ठीक है, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब जैसे सपोज करो कि इफ समवन हैव डिस्कवर्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहले ये क्या होते हैं ये समझो आप. व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? लाइक द बैक्टीरिया, वायरसेस, ओके, पैथोजेंस. ठीक है, लिविंग पैथोजेंस, लिविंग पैथोजेंस. ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सपोज दैट कि इफ समवन हैव डिस्कवर्ड द न्यू वेरिएंट ऑफ द कोरोना. ठीक, उसने नया कोरोना का नया वेरिएंट खोजा. ठीक है. सो अब क्या है कि अब उसने खोजा, और वो सबसे पहला पर्सन जिसने वो चीज़ खोजा, और उसने ये बताया कि बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, वी कैन क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन इनहिबिट द इन्फेक्शन ऑफ दिस वेरिएंट. ठीक है, वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बाय द इन्फेक्शन ऑफ दिस वेरिएंट. ठीक है, तो दिस इज द इन्वेंशन ऑफ दैट, क्या, दैट पर्सन. ठीक, वो उसका इन्वेंशन है. तो द पेटेंट रिगार्डिंग दैट इन्वेंशन, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन बाय द बुडापेस्ट ट्रीटी. ठीक है, बट हियर इज रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी मतलब जो क्लेम करने वाला है, क्लेमेंट है, फाइन, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जो भी उसका वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो भी इन्वेंशन है, ठीक है, उसको वो पूरा के पूरा उसको एक अथॉरिटी में डिपॉजिट कराना पड़ेगा. उसका पूरा एक क्या बोल सकते हैं उसको, रिपोर्ट. हाँ, ही मस्ट बी डिपॉजिट द रिपोर्ट ऑन द इन्वेंशन रिलेटेड टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एन अथॉरिटी. ओके, एंड अथॉरिटी इज हियर. अथॉरिटी का नेम यहाँ पे दिया गया है द इंटरनेशनल डिपॉजिटरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कौन सी अथॉरिटी? इंटरनेशनल डिपॉजिटरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड अंडर द WIPO. ओके, तो क्लेमेंट मस्ट बी डिपॉजिट. ठीक है, मस्ट बी डिपॉजिट हिज इन्वेंशन. ठीक है, तो भी उसका जो भी इन्वेंशन है उसकी रिपोर्ट, और वो इन्वेंशन भी क्या उसने खोज किया है, फाइन, जो भी फाइल है उसको एक फाइल बना करके ही मस्ट बी डिपॉजिट दैट इन्वेंशन इन द अथॉरिटी नेम इज द इंटरनेशनल डिपॉजिटरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज गवर्न अंडर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो उसमें ये चीज़ उसको करना पड़ेगा. फाइन. ओके, सो दिस इज अबाउट द बुडापेस्ट Treaty of 1980s. The next one is the trademark law treaty. ठीक है, next one is the trademark law treaty. Clear? Trademark law treaty, and this was done in the 1994. क्लियर. अब ट्रेडमार्क्स है तो इट डील्स विद द ट्रेडमार्क्स. ओके, तो दिस इज हियर हार्मोनाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड द इंट्रोड्यूस द सर्विस मार्क्स इन द एम्बिट ऑफ ट्रेडमार्क्स. दैट मीन्स कि ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, तो इसको क्या करना, हार्मोनाइज करना. हार्मोनाइज द administrative service. That means कि it is actually facilitating the smoothness of the administrative service. ठीक है, regarding the trademarks. Okay, and introduce the service marks in the ambit of trademarks. Earlier trademarks were accorded only to goods. Okay, अभी क्या है कि मतलब इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जो भी चल रहा है, क्लियर, तो उसके रिगार्डिंग ये जो भी प्रोसीजर है उसको क्या करेगा, हार्मोनाइज करेगा. यू कैन से इजीनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर.
ठीक है. Actually this is here for the protection of the trademarks. तो trademarks किसी को भी easily मिल सकेगा. Okay. So the provisions are given under the trademark law treaty 1994. Okay. यहाँ पे तीन और बचे हुए हैं छोटे छोटे. ठीक. The first next one is the The Hague Agreement concerning the Hague Agreement concerning the international deposit of industrial design. Deposit of industrial डिज़ाइन. ठीक है. 1925. ओके. ओके. Actually this treaty, the Hague Agreement, this agreement concerning the international deposit of the industrial design. ठीक है. And this is done in the 1925. Clear? So actually by this provision, sorry, by this treaty there is a what, introduction of a new bureau. ठीक है. New bureau, and bureau is here related to the bureau, new bureau, and bureau is related to the what, related to the industrial design. Okay. So this is created the industrial design bureau for industrial design under the वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो. ठीक है. तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो भी इसके प्रोविजंस हैं. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज अ International Union for the Protection of New Varieties of Plant. The International Union for the Protection of New Varieties of Plant. Protection of new varieties of plant. Okay. Plant in the year of the 1961. 1961. ठीक है. देखो अब नाम से ही पता है इसका, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वैरायटीज ऑफ द प्लांट्स. दैट मीन्स दिस इज प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू द व्हाट, प्रोटेक्शन टू breeders and farmers. Providing protection to what, breeders and the farmers. जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, अभी बड़ा अच्छा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, इन द गुजरात. ओके. गुजरात स्टेट देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द न्यू काइंड ऑफ पोटैटो. ठीक है. एक पोटैटो है, पोटैटो ही है या और कोई वैरायटी है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है. फाइन. तो वहाँ के एक फार्मर हैं. ठीक है. एक्चुअली ही डेवलप्ड दैट वैरायटी. ओके. तो उन्होंने उस वैरायटी को डेवलप किया, एंड बाय द डेवलपिंग ऑफ दैट स्पेशल वैरायटीज ऑफ द पोटैटो, the economic condition of the farmers of that particular area is get strong actually. ठीक है. तो अभी उन्होंने ऐसा कोई अगर वैरायटी डेवलप किया है, तो प्रोटेक्शन ऑफ
that kind of the what creation by the farmers or the breeders, ठीक है, would be protected by this international union for the protection of new varieties of the plant 1961. Okay. Okay, so here is agreement on trade related aspects of the intellectual property. This is the आपने ट्रिप्स पढ़ ही लिया है, ठीक है, ट्रिप्स वी हैव कंप्लीटेड ऑल्सो, मतलब ऑलरेडी. तो नेक्स्ट इज द ट्रिप्स, लेकिन हमने ट्रिप्स पहले ही कर लिया. फाइन. ओके, अब अभी जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम ना, तो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज द व्हाट, द नेक्स्ट चैप्टर इज द वेरियस सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया. ठीक है, वेरियस सब्जेक्ट्स मैटर्स द intellectual property in India. Clear? The various subjects. There are the issues are here, okay, which is actually related to the intellectual property rights. Clear? That means there are the condition, so many conditions have faced, ठीक है, फॉर द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग दिस. ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन सुनने में आ चुके हैं. ठीक है, अब जो हम इसको करेंगे ना, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक, द वेरियस सब्जेक्ट्स मैटर्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इन इंडिया. That means we will consider about the each and every intellectual property rights, like we will discuss about the copyrights. Okay, so copyrights and the issues related to the copyrights, ठीक, and in the copyrights we will discuss about the governing body or governing organization or governing ministry of the copyrights. ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर कॉपीराइट्स को क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है. ओके, जैसे इफ व्हेन वी आर डिस्कस अबाउट द कॉपीराइट्स, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, जैसे देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द कॉपीराइट ऑफिस, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. फाइन. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में कोई ऑफिस है, कॉपीराइट ऑफिस बना हुआ है. फाइन. एंड दिस कॉपीराइट ऑफिस इज एक्चुअली created by the Copyright Act 1957, and this Copyright Act is actually amended in the 2012. तो ऐसे ही कुछ प्रोविजंस है ना, उसमें सारे प्रोविजंस दिए हैं. फाइन. So each and every IPR would be discussed in the reference of the India and the problems related to the IPRs in India. ठीक है, which we will have to cover. ठीक है, उसको हम पूरा नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर करेंगे. फाइन. एंड सब उसमें हम सब बात करेंगे कि विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ द IPR, द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉपीराइट, प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क्स, प्रोटेक्शन ऑफ द GI टैग. क्लियर? तो अभी बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी इन वेरी रिसेंट देयर वाज अ डिस्प्यूट between the GI tag, the Kandamal Haldi GI tag between the Odisha and Andhra Pradesh, I think. Okay, so Andhra Pradesh was claiming that this is the origin. Kandamal Haldi is the origin. The origin of the Kandamal Haldi is the Andhra Pradesh land. Okay, but Odisha is claiming no. The Odisha land is the what? The origin of the Kandamal Haldi. So there was a dispute. Okay, so about the dispute we will discuss. Fine. And for the today this is completed. And we will continue in our next class, okay, with this IPR remaining topics, and after that we will start some new topics. हम वो उसी दिन क्लास में आपको बता देंगे कि आज से हम क्या नया स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, so for today this is enough. Thank you so much. Thank you for your cooperation and be safe and stay safe. ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, चलते हैं. बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.